Welcome, boys and girls. Today we're going to learn about latitude and longitude. We'll learn how to find the poles, the hemispheres, important lines of latitude and longitude, and we'll also use coordinates to find places on a map. So let's start with the lines of latitude. To learn about latitudes, we'll go to our friend, Allie the alien. Hi, Ellie. Hi, friends. I have been looking at the Earth from my home planet, so I have learned all about latitudes. Latitudes are imaginary lines that run in an east-west direction parallel to each other. The longest latitude is called the equator. You Earthlings have some strange words. It runs around the center of the Earth and divides the Earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. Latitudes are measured in degrees, and the equator is marked at 0 degrees. Latitudes north of the equator go up in numbers from 1 to 90 degrees until they reach the North Pole. Latitudes south of the equator go down as negative numbers until they reach negative 90 degrees, which is called the South Pole. Okay, I'm hungry now. Time for a delicious alien snack. Thanks, Allie. Some other important latitudes are the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, also called the tropics, and the Arctic Circle and Antarctic Circle, which are also called the polar circles. Now, these latitudes are important because they roughly define different climate zones in the world based on how much sunlight each zone gets. The area between the two tropics gets the most direct sunlight and is called the tropical zone. And the climate in many parts here tends to be warm and humid with lots of rain. The area between the tropics and the polar circles is called the temperate zone, where you can generally experience all 4 seasons during the year. The area beyond the polar circles is the polar zone, which gets the least direct sunlight and is generally cold and full of ice and snow. Now, keep in mind that climate depends on many other things, and there are dry areas, like the Sahara Desert, even within the rainy tropics. But latitudes can still help predict the climate trend of each zone. Okay, so enough about latitudes. Now let's talk about lines of longitude. Allie, are you done with your snack yet? Sure I am. Longitudes are imaginary lines that all start at one pole. They move away from each other until they get to the equator, and then they start closing in and meet again at the other pole. The central longitude is called the prime meridian. This line divides the Earth into the western hemisphere and the eastern hemisphere. Like the equator, the prime meridian is marked at 0 degrees. Longitudes east of the prime meridian go up in numbers to 180 degrees east, and longitudes west of the prime meridian go down as negative numbers to negative 180 degrees. Okay, time for my dinner now. Already? Okay, thanks, Allie. Lines of longitude mark time zones. As the Earth rotates on its axis, only 1/2 of the Earth faces the sun at any given time, and so when it's nighttime in one hemisphere, it's daytime in the other hemisphere, and this means that people in different parts of the world live in different time zones. To tell a time difference between 2 parts of the world, you just have to count the number of longitude degrees between them. Every 15 degrees is a 1-hour time difference. So 2 cities like Chicago and New York, which are roughly 15 degrees apart, have time zones 1 hour apart. So when it's 3 p.m. in New York, it's 2 p.m. in Chicago. London is about 75 degrees away from New York, and sure enough, its time zone is 5 hours ahead of New York. The prime meridian marks the baseline time zone, which is called Greenwich Mean Time, or GMT. All other time zones are measured relative to GMT. Okay, now let's use longitudes and latitudes to locate places on a map. The latitude and longitude position of any place on Earth is called its coordinates, with the latitude shown first and the longitude shown second. So if I asked you to look for a mystery place with coordinates of 30 and 31, you would find the latitude at 30 degrees and the longitude at 31 degrees, and where these 2 lines meet is our mystery place, the Great Pyramid of Giza. And in the same way, if I asked you to look for a mellow mystery place with coordinates of -3 and -59, you would look for the latitude line at -20 degrees and the longitude line at -59 degrees, and where these 2 lines meet, you would find our second mystery place, the Amazon rainforest. So, as you can see, each place on Earth has its own unique set of coordinates made up of a latitude and a longitude, and so if you know a place's coordinates,
You can find it on a map. And now you know all about latitudes, longitudes, and coordinates. Thanks for watching. क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने से आपकी जिंदगी का एक दिन कम या ज्यादा हो सकता है। उस रेखा को इंटरनेशनल लीड लाइन कहते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल को 180 डिग्री मेरिडियन से जोड़ती है। अगर आप इस लाइन को वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हुए क्रॉस करते हैं तो एक दिन घट जाएगा, यानी आपको एक और दिन मिल जाएगा काम करने के लिए। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा ताकि डेट की कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए इस लाइन से ना होकर सी से ड्रॉ किया गया है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, यह है रसिया की केप बेजनी सिटी और यह है अलास्का की केप प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनके बीच के यह डिस्टेंस मात्र 80 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि 20 दिसंबर को आप केप बेजनी से शुरू होकर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब आप तारीख देखते हैं तो यह मिलती है आपको 19 दिसंबर, यानी कि पूरा एक दिन पीछे। इस डेट के डिफरेंस का रीजन है ये लाइन। यह है इंटरनेशनल डेट लाइन जो पैसिफिक ओशन में रफली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्केल ऑन गुजरती है। ये एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन ना होकर इसमें लैंड मासेस और नेशनल बॉर्डर्स के अराउंड कई बैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच इस बेरिंग स्ट्रेट पर यह लाइन ईस्ट की तरफ मुड़ी हुई है, जिसका ऑब्जेक्टिव कंट्रीज में डेट्स को यूनिफॉर्म रखना है। इस लाइन को जब आप ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो आप एक दिन पीछे चले जाएंगे और इसके अपोजिट इस लाइन के वेस्ट की तरफ जाने से डेट एक दिन बढ़ जाएंगे। There is only one country in the world that is located simultaneously in all 4 hemispheres. The equator line at 0 degrees latitude separates the northern and southern hemispheres, while the prime meridian at 0 degrees longitude divides the globe into the eastern and western hemispheres. The 2 lines intersect in the Pacific Ocean, where Kiribati is located, a small nation consisting of 32 coral atolls and 1 island. Although being one of the smallest countries in the world, with a land area of just 811 square kilometers, Kiribati has land in all 4 hemispheres, and it is the reason why the international date line has this zigzag section, so all of Kiribati's islands can have the same day at the same time. Hello दोस्तों, welcome to the second series of Earth. इस सीरीज में हम जानने वाले कि ग्रिड सिस्टम क्या है। What is this grid system? आप ये लाइन्स देख रहे हैं इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। किसी ने जाके बनाई नहीं है ये लाइन्स, these lines. So can you see these lines? तो ये लाइन्स जो है वो है ग्रिड, that is parallel of latitudes और longitudes. अभी ये है क्या वो हम समझते जरा एक छोटे से वीडियो द्वारा। This is the equator. आप यहाँ पर equator देख सकते हो यहाँ पर, right? So this equator divides the earth. ये earth को 2 हिस्सों में बांट रहा है। This is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है। This is जैसे ऊपर हो जाते जाते तो क्या होता है, डिग्रीज बढ़ते जाता है, 10, 25, 30 and these degree it goes up to 90 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ। जैसे कि यहाँ इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है। जैसे 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 ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, आर्टिक सर्कल आएगा एंड देन इट इज द 90 डिग्री नॉर्थ, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेम ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर है, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके नीचे नीचे जाओगे देन 66.5 डिग्री पर आर्टिक सर्कल चालू होता है and down it is what 90 degrees south. So ये जो latitude, ये जो lines है अर्थ के ऊपर, this is called as parallel of latitudes. ये दोनों, ये सारी lines एक दूसरे से क्या होती है, parallel होती है, right? Same way parallel of longitudes. Longitudes क्या जो north और south को मिलती है, right? The line which meets north and south pole, right? These lines. ये जो lines है वो parallel नहीं है एक दूसरे से because they are meeting at north and south pole. So they are called as longitudes. और same way longitudes भी यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। And what is this 0 डिग्री लाइन कौन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर जैसे कि ईस्ट तरफ जैसे जैसे जाएंगे so it goes up to 180 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर लास्ट है 180 डिग्री ईस्ट। सेम वे जैसे 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 हम लोग यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये भी है 180 डिग्री वेस्ट। दिस इज द लास्ट प्लान, राइट? तो होपफुली आपको ये ग्रिप सिस्टम समझ में आएगा और ये बहुत ही यूजफुल होता है सोल्जर्स के लिए या अपनी लोकेशन ट्रैक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।